Good morning. Good Good morning. morning, beta. Good Morning, morning, No, ma'am. Sarah, ma'am. there's Very a good reverberation morning. of good morning in the morning, so everybody's day has to be perfect. Good Yes, morning, beta. Good Good morning. morning, Auntie. Good morning. everybody's morning is good. Yeah, morning, and they say that if the morning is good, like the success and failure in life depends upon how the mornings are. This is what Robin Sharma says. So our morning is so powerful because at least, I always say that this for 1 hour, कहते हैं कि meditation is focusing on one thing, है ना? So in morning for 1 hour, we focus only on the teachings of these beautiful books, So it becomes like we are anyhow meditating for 1 hour. So अगर आपका इसके अलावा कोई और मेडिटेशन नहीं भी हो रहा है तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस आने लग जाएंगे बिकॉज अगर हम इंटेंटली किताब को सुनते हैं और पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं so we are anyhow this is like the reading meditation. They say no that you can take a sentence and meditate on that, like the divine the divine love of God always surrounds me. So on that you can meditate. Sometimes we can meditate on that I am enjoying the best of my health. So just on that word you're meditating, that means you're sinking it down in the subconscious mind. So it works like that. So we can meditate on anything. So this 1 hour we are meditating because it is like we're just focusing on the teachings of the books and trying to understand and analyze it in our own way. So it is only the reference is only the book. So this becomes like an hour of meditation. This is the reason itna sara changes aa raha hai. कल आप लोगों ने आरती का एक्सपीरियंस पढ़ा था. आरती तुमने शेयर किया था ना ग्रुप में, मैं देख नहीं पाई थी. So I think Aarti had shared on the group. So Ma'am, please make me the co-host. Well begun is half done. yes, 70% परसेंटेज हम बढ़ा देते हैं. परसेंटेज बढ़ाना तो हमारे हाथ में है ना. Yes, true. Make co-host done. आज सुबह सुबह मीटिंग ऑन करने में थोड़ा ग्लिच आ रहा था तो इसलिए लेट शुरू हुआ था. So I spoke to Priya. I thought maybe she can. So anyhow, it's all sorted now. So yes, today's chapter, very interesting, magnificent outcome. That means कि कोई भी outcome मतलब result, परिणाम. So कोई भी काम करने के पहले हम पहले से ही उसके लिए थैंक यू बोल देते हैं कि बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छा, it was amazing, it was so conclusive and like such a brilliant work or whatever, such a great meeting, I was really, everyone heard my say and then I could give very good points. Thank you universe for such a, so उस तरह से. So again, this is the second last chapter जब हम अपने future के लिए work कर रहे हैं. So हर चीज magnificent हो जाएगी तो obviously life तो magnificent हो ही जाएगी ना. So that is what it is about. Day number 21. So Ritu will be reading it for us. And इसमें पिक्चर हम देख लेते हैं. मैग्निफिसेंट आउटकम का मतलब होता है according to Abraham Hicks, segment intending. That means setting an intention to the next segment of our life, है ना. जैसे एक दिन में segments होंगे, जैसे अभी स्टडी का सेगमेंट चल रहा है. वी आर ऑल स्टडिंग फॉर द नेक्स्ट 1 hour. उसके बाद सेगमेंट शुरू होगा. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस ईदर विल बी गेटिंग रेडी टू गो टू वर्क or we will be cooking some lunch to pack for जो भी घर से जा रहे हैं खाना लेके जाने के लिए, or it could be people working out like me. Okay, so come time but working out. So वो नया सेगमेंट होगा. उसके बाद ड्राइविंग टू वर्क प्लेस थर्ड सेगमेंट होगा. फिर उसके बाद मेन मोटी मोटी चीजें जैसे आई हैव टू गिव द ट्रेनिंग टुडे, वो मेरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आज दिन का. उसके बाद our lunch time together with all these trainers who've come from different parts of India, एक नया सेगमेंट होगा. फिर एक ऑफिस का काम करना है, वो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है. ठीक है. सो ये सेगमेंट्स हैं इन अ ब्रॉड नटशेल जो आज हैं. तो इन सबको इसमें एंटर करने के पहले उसके सक्सेसफुल आउटकम के लिए थैंक यू बोलना, फील करना और यूनिवर्स से बात करना अपने मन में. That's what magnificent outcome is. पहले से ही कह देना that wow, I'm doing that work, it came out so amazing, thank you universe, like that. और ये जो पिक्चर है इसमें वही है. The door is open and a beautiful door is open if you can see, and that opens और उसके आगे जाके खूब सारा gratitude है. इतना gratitude है कि उसमें haze हो गई है.
तो इसका मतलब है हम इस रूम के अंदर खड़े हुए हैं एंड वी आर स्टेपिंग आउट इनटू डूइंग समथिंग, और वो जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू बोलना। सो ये वाला चैप्टर तो हमारा वे ऑफ लाइफ है। हाँ जी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Day 21, Magnificent Outcomes. Quote, you say grace before meals, all right, but I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, 1874 to 1936, writer. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I'm going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there's no chance at play and gravity's law will never fail. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something or you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart-to-heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert. The magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air
and imagine you're sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there's something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there's something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you will attract to. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. If you're a parent and you're asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there's a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere and at some time, guaranteed. Whenever you find yourself thinking there's chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember there's no chance for the law of attraction. You will get what you're thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. When you're grateful for magnificent outcomes, you're using universal law and changing hopes and chances into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract in your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, or an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids,
paying the bills, or collecting the mail. Make a written list of the 3 situations you've chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power. And as you write each one, imagine that you're writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand, or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome of dash. You can't do this magical practice too much because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it and in the future. If you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Magic practice number 21. Magnificent outcomes. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, at the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. Number 3, list your 3 things and write each one as though you're writing it after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. Number 4, as you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome to dash. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Ritu. Thank you for reading so beautifully. Long chapter this is, but it is just giving us the essence that कोई भी काम करने के पहले उसके लिए, you know, like use इसमें जो word, the word which is used in this is use your thoughts and feelings. So today we are going to use that. Not today, henceforth, because हम सबके day में कुछ ऐसे events होते हैं जहाँ पे actually chance at play होती है. Let's see how it works. That's what we say sometimes. कि ठीक है, चलो होने दो. Let's be calm. Let's see how it works. किसी से बात करते हैं तो हम बोलते हैं I really hope it turns out so well. I really hope it works out. You know, I really hope मेरी meeting आज बहुत अच्छी रहे. ठीक है, या फिर बोलते हैं you know like I really wish इस तरह से अगर ये चीज हो जाए. I really wish मुझे कोई मिल जाए. I really wish मेरा ये काम जल्दी से पूरा हो जाए. So ये जो I hope, I wish, you know, chance वाला let's see, ये जो words होते हैं, these are very undecisive, isn't it? I mean, like they are not even telling us that देखते हैं क्या होगा, देखा जाएगा, you know, that way. So they are so undecisive.
when we enter into anything to do with so much of undecisiveness, yeah, so much of hope. I have never liked this word, hope. That hope, let's see. Why? We can decide the outcome, we can choose it. So हमारे beliefs कभी कभी इतने strong, dogmatic hold करते हैं हमारे दिमाग में, that we become, like हमको बहुत मुश्किल होता है ये सोचने में कि हम भी एक मीटिंग में सबके सामने खड़े होके बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं when there are so many seniors in a meeting. So ये होता है ना, like past conditioning से या जो भी है, maybe we've been a failure in the past. So इसीलिए हमेशा हमारे दिमाग में रहता है, I hope I can do it. I hope I should be able to take this thing. I hope that, I really wish that I get that. Okay, so we have to eliminate those words of doubt and unclarity from our life. अब हमको नहीं use करना है I hope and how I wish and this and that. Okay, we have to say thank you for that futuristic thing already, as if it has happened. इसी को बोलते हैं magnificent outcome. Magnificent बहुत powerful word होता है, मतलब it's majestic, it's big, is huge. So this is the reason setting up an intention even before we do something becomes very important. क्या चाहिए हमको? Suppose मीटिंग है और हर बार ऐसा होता है, मे बी ऑफिस मीटिंग में, दैट बहुत ही अनकंक्लूसिव सी होती है. आप हमेशा उसके बाद थोड़े से यू आर इन एंजाइटी, और देयर आर थिंग्स दैट हैपन दैट यू डोंट लाइक, मे बी यू आर नॉट हर्ड. आपको क्लैरिटी के साथ कोई समझता नहीं है, पीपल, यू आर नॉट मोस्टली अंडरस्टूड टू पीपल. इट कुड बी दैट, है ना, ऑफिस मीटिंग्स में ये सब बहुत कॉमन होता है. सो उसके लिए पहले से ही हम कर सकते हैं that thank you for the magnificent outcome to the most amazing meeting that I had in office. Okay, अगर आपको उसके आगे ऐड करना है कुछ, where I was really understood so well and I was really appreciated and applauded for my inputs. Okay, so ये आप पहले से ही thank you कर दिया with thoughts and feelings. So these are the two keywords which are there in the chapter that I caught. Okay, that today's practice is about using thoughts and feelings to create the future that we want to our way. Okay, so this is what. So if we remember, जब हमने power of the subconscious शुरू की थी, तो power of the subconscious mind में first chapter में ही था that what is God is your thoughts and feelings. And of course, because Dr. Joseph Murphy is a Christian person, और क्योंकि वो pastor थे church में, शादियां भी कराते थे लोगों की, है ना, so वो कहते हैं Jesus lies in your thoughts and feelings. So thoughts and feelings are what are governing our life. इसीलिए कभी कभी आउटकम बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, है ना. जब कभी किसी का बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा होता, सपोज थोड़ा रॉकी फेस चल रहा है, दैट्स बिकॉज बार बार हम दिमाग में यही सोचते हैं दैट इट इज द लाइक माई बिजनेस इज नॉट गोइंग दैट ग्रेट, माई बिजनेस इज नॉट गोइंग दैट ग्रेट. तो क्या है हमारी थॉट्स उस वक्त? माई बिजनेस इज नॉट गोइंग दैट ग्रेट. मैं कहाँ से लेके आऊं क्लाइंट्स? माई बिजनेस इज नॉट गोइंग दैट ग्रेट. ऐसे नहीं सोचना होता है हमको. हम ऐसा सोच रहे हैं ना, इसलिए वो आउटकम आ रहा है. तो अपना सोचना चेंज कर दो अब से, है ना, यही हमको करना है. मेरे भी ऑफिस में कुछ सो yesterday there were meetings, there training, so कुछ ना कुछ चल रहा है. Of course, like most of the time I'm training, but then of course as CEO and everybody had also come to meet all my trainers from all India. So of course जब वो बात कर रहे थे तो मैं बाहर ही थी, तो कुछ हो रहा था. फिर like I felt my team was fragmenting. फिर मैंने बस यही सोचा शाम को, so then the universe is your father and mother, then you don't need to worry. I kept telling this to myself. I said, Deepti, just chill. Why are you getting affected by all this? I said, when the universe is your controller, when you have that power, you don't need to worry about it. Everything will, I always keep saying, everything will always work out the best. And there is not even second best. Okay, because कोई हर चीज बेस्ट ही होती है और बेस्ट ही होनी पड़ेगी, क्योंकि हम बोलते हैं ना, लाइफ इज सो इजी एंड एफर्टलेस.
And because we keep telling that, I'm always surrounded by happy, positive, and fun people. So there are certain people who will get eliminated from your life, जिनकी वजह से life अच्छी नहीं हो रही थी. So this is okay. That is universe's play. So when you surrender to the universe, nothing bad can happen to us, no? So that is what. So कभी-कभी crucial times में ये practices बहुत handy आती हैं. जब आरती ने कल अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, आई डोंट नो वो अगर वोकली कर सकती हैं अपना, she did 1 to 19 practices in one day. Okay, and she wrote 108 times thank yous, just thank yous. So 1 to 19 practices in one day, and then in one day her total outcome changed. मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, जिसमें उनको 3 करोड़ रुपया कुछ देना था. आई डोंट नो वेदर वो मैंने सेपरेट पढ़ा था, मैं ग्रुप में एक्सपीरियंसेस नहीं पढ़ पाई थी कल बहुत ज्यादा, ऑल्दो आई डिड ट्राई टू ब्रश इट अप इन द इवनिंग, बट लाइक 3 करोड़ का पेनल्टी, दैट्स अ लॉट, राइट? आई मीन लाइक, सो एक दिन में इतनी बड़ी सिचुएशन रिजॉल्व हो गई, ठीक है. 1 to 19 उन्होंने सारी प्रैक्टिसेस करी एक दिन में. सो इस तरीके से जब आप ग्रैटिट्यूड पे लीन करते हो, अपने आप पूरे यूनिवर्स के फोर्सेस आपकी लाइफ में वर्क करना शुरू कर देते हैं. एंड व्हेन दे वर्क, everything, it's like the sun shining and all the stars disappear. So it's not that the stars are not there, the stars are there, but सूरज की रोशनी में वो नजर नहीं आते. कहते हैं ना फायरफ्लाइज, जिसको हम जुगनू बोलते थे. जुगनू क्यों रात में नजर आते थे? बिकॉज उस वक्त अंधेरा होता था, है ना. सो कहते हैं ना कि फायर फ्लाइज इन फ्रंट ऑफ द सन. सो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं छोटी 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 छोटी, दे आर लाइक फायर फ्लाइज इन फ्रंट ऑफ द सन. सन इज द ग्रेटिट्यूड, द फोर्स ऑफ द यूनिवर्स. ओके, एंड जब वो चमकते हैं तो हमारी बाकी की सारी प्रॉब्लम्स, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हमारी लाइफ में चल रही हो, इट कुड बी अ हेल्थ चैलेंज, इट कुड बी अ रिलेशनशिप चैलेंज, इट कुड बी व्हाटएवर चैलेंज, ठीक है, दे आर लाइक फायरफ्लाइज, दे आर लाइक जुगनू. तो जब सूरज उगता है तो सारे जुगनू छुप जाते हैं, ऑल द फायरफ्लाइज यू कांट सी. इट्स नॉट दैट दे आर नॉट देयर, आई मीन दे स्टिल लिव, यू विल अगेन सी इट द सेम इवनिंग, they'll still be there, ठीक है, but that's how it is, that's how it works, so this is the law, this is how it works. So the moment, and ये होता ही नहीं है that when you're grateful for something and something doesn't come out the way you would have wanted. Okay, अगर ऐसा है, इसका मतलब यूनिवर्स का प्लान बी है. You are asking for 1 crore and universe is saying you have 2.2 waiting for you, so अब कैसे वो बात करे हमसे कि प्लीज ये 1 करोड़ छोड़ो, ये 2.2 तुम्हारे लिए वेट कर रहा है जो 2 दिन बाद है. तो हमारा प्लान ये वर्क ही नहीं करेगा. The universe will not let it work. Because when you're leaning on gratitude, when you're leaning on the forces of the universe, or the power of the universe, then the plan B, which is 2.2 crore, that's waiting for us. We will get it after 2 days, and then we realize that, thank God ये हुआ और वो नहीं हुआ. अगर वो हो जाता तो ये मुझसे रह जाता, है ना. इस तरह से होता है. So this is how the universe is always life forward, always pushing, always supporting, always guiding, and giving us the best, whatever best it is. But अपने स्पून का साइज बढ़ा रखोगे तब उस हिसाब से चीजें आती है. अपने स्पून का साइज बढ़ा रखने का मतलब है सरेंडर करो यूनिवर्स को. कभी कभी चीजें गलत होंगी, आपको उस वक्त लगता है चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा रीजन होता है, and which is always the best reason, because universe does make you realize that why that thing didn't happen and why this happened. और वो बहुत जल्दी आपके साथ जो प्लान बी यूनिवर्स का होता है वो बहुत जल्दी आंखों के सामने आ जाता है. ओके, सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क. सो मैग्निफिसेंट आउटकम वाला जो है, इसमें जो फर्स्ट जी के चेस्टरटन, ये एक ब्रिटिश राइटर थे बिकॉज ही इज टेकन अ ट्रांजिशन. सो वो उनका ये है दैट वो जब भी किताब लिखना शुरू करते थे तो वो जैसे ही पेन डिप करते थे इंक में तो खूब सारा थैंक यू बोल के लिखते थे. ठीक है, दैट मीन्स हमको इंटेंशन सेट करना चाहिए जब भी कोई काम कर रहे हैं. अगर आप कहीं जा भी रहे हो, कोई विजिट भी करनी है, आपको किसी फ्रेंड के यहाँ पे विजिट करनी है, उसके पहले इंटेंशन सेट कर लो. Thank you for the magnificent outcome to an amazing family outing which was full of fun and joy and love and laughter. ठीक है, अब आपने ये ऑलरेडी कर दिया है बट थॉट्स में तो आ ही गया है ये. अब फीलिंग्स में भी इसको उतारना है. सो फीलिंग्स में स्ट्रांगली करना पड़ेगा. वाओ, दिस इज सो अमेजिंग. एक होता है ना फीलिंग इज द फ्यूल, जो बोलते हैं
that एक होता है that भारती you made such nice parathas, मुझे अच्छा लगा, बहुत टेस्टी है. एक होता है wow भारती यार तुम्हारे हाथ में जादू है, मुझे मजा आ गया खाने में, है ना? So there's a difference in both of these. So the second one has more feelings attached to it. So that thank you will have more power, and it will reverberate into the universe with a higher intensity. Okay. And accordingly, it will multiply and come back to my life. That love and appreciation. Okay. This is how it actually works. So magnificent outcome, जो परिणाम आपको चाहिए, इसमें आज हमको assignment के हिसाब से 3 ऐसी चीजें चूज करनी है that are going to happen today, जो आज होने वाली है, जो हमको पता है कि ये होगी. जैसे हो सकता है आपको ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना हो सकता है यू हैव अ मीटिंग एट वर्क टुडे, हो सकता है आपको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन करना है, हो सकता है आपको ट्रेनिंग देनी हो सकता है आपको ट्रेनिंग लेनी हो सकता है आपको एक बुक पढ़नी हो, कोई आपने सोचा हुआ है, ठीक है. हो सकता है आपका वर्कआउट, आपको बहुत आपने सोचा आज मैं बहुत अच्छा वर्कआउट करूंगी बिकॉज यू हैव सम टाइम इन योर हैंड. Okay, so what, or maybe somebody is coming over for dinner, or somebody is coming for your coffee in the evening, and you want to make some nice snacks or something like that. है ना? कुछ भी हो सकता है, जो भी है. आपको शॉपिंग करने जाना है, maybe you want to go to pick up a jewelry, maybe you want to go to pick up an outfit, maybe जनरल शॉपिंग करने जाना है, ठीक है. तो जो भी सेगमेंट है आज के, उसमें से हमको 3 इंपॉर्टेंट चूज करने हैं आज, और उसके लिए लिखना है. आज की रिटन प्रैक्टिस है, ठीक है. सो रिटन प्रैक्टिस है, और लैंग्वेज ये होनी चाहिए थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू डैश. सो थैंक यू फॉर magnificent outcome to the most amazing training that I conducted today, that really, like I could improve the understanding of all my faculties with so much clarity that now they will be able to go and teach to their students. Okay, so मैंने उसके लिए पहले ही थैंक यू बोल दिया कि मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी उन लोगों को, उनको बहुत अच्छे से समझ आई, उनकी अंडरस्टैंडिंग एनहांस हुई, और अब वो उसको जाके अपने फर्दर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगे. तो उसके लिए पहले ही थैंक यू बोल दिया, ठीक है. फिर उसके बाद जो और कुछ काम करने हैं, बहुत सारे लाइंड अप इंटरव्यूज आज. So thank you for the magnificent outcome to a very smooth and easy interviews where I could touch the lives of all those, interviewees who had come for that, for the interview. So they may get selected, they may not get selected, but it was very easy and fun time. And, like when I reject people also, sometimes I have to, because we cannot take everyone like that. They have to, उनके असेसमेंट में कुछ 80% या कुछ आते हैं, तब जाके हम उनको लेते हैं कंपनी में. तो बहुत सारे, तो मैं कभी भी उनको ऐसे नहीं बोलती हूँ कि oh you are rejected and you did not perform well and your percentage is so low. I always sit with them. Okay, I sit with them and then I tell them that, I know that you have the capability. It's just that you need to study more. So this is your training that you can groom yourself. So just study more and come back to me after 3 months. Okay, I always tell them that. So many of them have actually taken, जो समझदार लोग होते हैं वो वापस 3 महीने के बाद आते हैं, और फिर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले पहले आते हैं और फिर बाद में they come back to me again and they say that आपने बोला था कि 3 months में बहुत पढ़ाई करो. तो फिर मैं ये भी नहीं, I also tell them the list of books they should be studying, to improve their knowledge. So that also, मतलब of course वो सारी nutrition and dietetics related books होती हैं, तो मैं वो भी उनको list नाम भी बताती हूँ. So this is how, so it also becomes a segment, right? And then of course we have some other things to do. In the evening I have to go to someone's house. So of course उसके लिए पहले से thank you for the magnificent outcome to an amazing meeting with with the people I'm meeting there. So this is how we say, ये लिख के करने वाली practice है by the way. लैंग्वेज यही होनी चाहिए, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, या फिर उसके मतलब जो भी चीज अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो धन्यवाद मेरे इस चीज के अद्भुत परिणाम के लिए. तो इस तरह से हमको हिंदी में करना होगा. बट देन यू सी दिस इज अ लॉ, द फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स आर सेट इनटू मोशन. द मोमेंट वी हैड सेड थैंक यू, वी से थैंक यू इन एडवांस टू एनी आउटकम दैट वी डिजायर.
It is as simple as that. बस यही practice है. और इस तरह से we can decide the course of the event and now there is no chance of play. अब नहीं है कि I hope ये हो जाए, oh God I wish ऐसा हो जाए, I really want ये चीज ऐसी हो जाए. अब वो चीज चली जाएगी because you have added certainty to it. You have added certainty to your course of the event, है ना? So इसमें कुछ की वो थे जो मैंने highlight किए हुए थे. इसमें it says when gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude. हमको इस लेवल तक पहुंचना है, ठीक है? रोंडा बर्न तो पहुंच गई है, हमको भी इस लेवल तक पहुंचना है जब हम कुछ भी करें, even if it is your normal walk from here till the grocery store. Suppose the grocery store or the supermart is something very close to your house. Okay, अगर आपकी एक नॉर्मल वॉक है वहां तक की और आप शॉपिंग करने जा रहे हो, आप उसको पहले से मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं, है ना? So that is called that you go into everything with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. So that is what it is. And it says, and this gratitude will help us from protecting us from attracting what you don't want, bad outcomes. है ना? ऐसे नहीं होना चाहिए बाहर गए और मतलब ग्रोसरी की लिस्ट बना के गए, out of 10 things you've got only 6, 4 you didn't get only. क्योंकि मैग्निफिसेंट आउटकम नहीं, फिर चांस एट प्ले होता है, फिर वो है कि ठीक है उस स्टोर में था नहीं था. अदरवाइज क्या होगा कि आपका स्टोरी बता, यूनिवर्स विल चेंज द स्टोर ओनली. आई मीन ही विल मेक यू गो टू द अदर स्टोर. समथिंग विल हैपन एंड यू विल नॉट गो टू द प्रीवियस वन. अगर आप मैग्निफिसेंट आउटकम कर लोगे जहां पे आपकी ग्रोसरी लिस्ट में सारा सामान नहीं था, द यूनिवर्स विल नॉट टेक यू देयर ओनली. This is how it works. So it says that, that we will not get bad outcomes, and it ensures that you get what you want, which is the good outcomes. Okay, so that is it about it. तो बस ये practice है आज की. Morning, it is count your blessings. So we start our day in Brahmurat or in alpha state of mind with a lot of thank you. 10 gratitude के साथ हम शुरू करते हैं और उसको रीड करते हैं और हर एक के बाद भी से थैंक यू थैंक यू थैंक यू. एंड बिफोर गोइंग टू बेड इन द नाइट, एक छोटा सा पत्थर, नॉर्मल पत्थर, मैजिक रॉक दैट वी होल्ड इन अ हैंड, और हम पूरे दिन भर का सोचते हैं ये हुआ था, थैंक यू, और क्या हुआ था, अच्छा हाँ उसके बाद उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था, थैंक यू, फिर और क्या हुआ था. पूछोगे ना क्वेश्चन, तब बहुत अच्छे से याद आता है. आप देखना, अगर आप सोचने की कोशिश करते हो तो मुश्किल होता है, बट आप अपने दिमाग से जब पूछते हो ना, और क्या हुआ था, व्हाट वाज इट, एनीथिंग दैट आई एम फॉरगेटिंग, और क्या हुआ था, then you will remember a lot. So remember everything, okay, and then pick the best thing and say thank you for that. और दिन भर में magnificent outcome करना है. ये तो हो गया एक्सपेक्टेड चीजों के बारे में. ये लिख के करना है प्रैक्टिस, अभी लिख लेंगे. आई थिंक मैं उसी वक्त लिख लेती हूँ, कभी कभी पहले ही कर लेती हूँ, कभी कभी बाद में. आज नहीं किए, आज इनफैक्ट आई डिडंट नो कि आज मैग्निफिसेंट आउटकम है, नहीं तो पहले हो जाता. सो ये, और 3 अनएक्सपेक्टेड भी. अब बहुत सारी टाइम होता है ना जब अनएक्सपेक्टेड है, जैसे अगर स्कूल से फोन आ गया तो पेरेंट्स को एकदम चिंता हो जाती है. व्हाई एम आई कॉल्ड टू द स्कूल, व्हाट हैज माय सन डन, व्हाट हैज माय डॉटर डन, आई होप हर हेल्थ इज ओके, आई होप एवरीथिंग इज फाइन. बिकॉज डर लगता है ना, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन कंडीशनड है नेगेटिव चीज सोचने के लिए. अगर कोई लेट हो रहा है आपके घर में, कोई आपका लव्ड वन, तो आप हमेशा बुरा ही सोचोगे दैट क्यों अभी तक लेट हो गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया. वी हैव टू स्टॉप डूइंग दैट नाउ. ओके, सो बिकॉज मैग्निफिसेंट आउटकम का टूल है ना हमारे पास. सो अगर कभी भी कोई ऐसी चीज आती है, कोई फोन आ गया, या आपके बॉस ने बोला कि कम इनटू माय कैबिन, या 4 बजे के बाद मुझसे मिलना, सो एकदम से लगेगा कि क्या हो गया, व्हाट हैव आई डन नाउ, सो इसमें वो सब नहीं है, इसमें मैग्निफिसेंट आउटकम कर दो. ठीक है, दैट थैंक यू फॉर द अनएक्सपेक्टेड वाली जो चीजें है, बिकॉज ये अब्रप्टली हुई है. जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है वो तो हमने सुबह लिख ही लिया है. ये जो अनएक्सपेक्टेड वाली चीज है, सडनली समवन गिव्स अ फोन कॉल, तो इसमें रॉन्डा बर्न ने समझाया है कि फॉर अ मोमेंट इफ यू कैन just close your eyes and in your mind think thank you for the magnificent outcome to my like my meeting with the school principal or the headmistress or whatever, that way. Or thank you for the magnificent outcome to my meeting the boss at 4 o'clock, it was really amazing. So this is how we can. So 3 unexpected बिना लिखे करने, impromptu, और 3 expected अभी सुबह लिखने. So these are the practice for today. So now we go to the other book, which is Creative Visualization.
जिसमें हम बहुत ही कूल पार्ट पढ़ रहे हैं, विच इज रियली नाइस, इलनेस के बारे में. दिस चैप्टर इज कॉल्ड हीलिंग. And what I'm loving most about this book is that it is not just affirmations. It is not like a lot of writing work. It is finally हमारी जिंदगी में एक book आई है, which is connecting us to our higher consciousness or higher intelligence. इसमें लगातार the book is asking us to communicate to our inner self, to our inner intelligence, to the inner being, which actually is God. Okay, and we never knew about it because हमने हमेशा वर्शिप अपने लाइफ के बाहर वाली चीजों से की है. हम हमेशा अपनी विश मांगने, sometimes we have traveled to so much of distance to go to a certain temple. Okay, least did we know that this huge power lies inside of us as well. Of course you can do that अगर आपको अच्छा लगता है ना, because जो चीज अच्छी लगती है वो करनी चाहिए. ठीक है, but the same power that you think you have by going to a particular temple or some religious shrine somewhere lies within us. Okay, and in fact उसको ही activate हम कर रहे हैं by doing this book. So ये जो particular chapter है healing, जो हमने कल पढ़ा था, आज हमको abruptly बीच में से शुरू करना पड़ा है because कल का वो topic बहुत लंबा था, तो हमने discontinue करके then now we are starting from today that healing कैसे होती है. तो उसमें कल वाले सेशन में हमने पढ़ा था कि जब भी हमारी बॉडी में कोई इलनेस आती है तो ये हमारे कोई बहुत डॉगमेटिक थॉट्स हमारे दिमाग में घुसे हुए हैं, वो इसलिए आती है ना. कल राजेश जी ने शेयर किया था. राजेश खन्ना, एक तो मुझे आपका नाम बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए आप ऑलरेडी यू आर अ सुपरस्टार, क्योंकि राजेश खन्ना के नाम से सुपरस्टार अटैच्ड है. तो अब अगर आप नहीं भी हैं तो आप बहुत जल्दी सुपर डुपर स्टार बन जाएंगे. और उन्होंने बताया था ना कि उनकी इलनेस इतनी थी, डॉक्टर ने बोला आपको स्टेरॉइड्स लेनी पड़ेंगी, ये करना पड़ेगा, बहुत टाइम चल रहा था, पेन बहुत ज्यादा हो रहा था उनको. फिर उन्होंने मेडिटेटिव पोजीशन में अपने इनर बीइंग से पूछा कि what is it that I need to do, because obviously no one wants to be dependent on steroids and all of that, है ना. So वो तो सारी बाहर की चीजें है, बट अंदर से क्या ऐसी चीज है that I can do. तो उनको ये हंच आया कि सिल्वर की रिंग पहनो, और फिर उन्होंने पहन ली और उसके बाद सेम डे उनका वो ठीक हो गया. जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे साइनस इतना परेशान कर रहा था, मैंने अपने इनर बीइंग से पूछा आंख बंद करके कि व्हाट इज इट दैट आई वांट टू डू, बिकॉज मैं एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहती थी, मैं ऑलरेडी 1 हफ्ते की ले ली थी. फिर उसके बाद वो दोबारा से रिलैप्स हो गया 10 दिन के बाद. और इतना उस वक्त बिजी टाइम चल रहा था, मैंने कहा अब तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगी. मैंने कहा लुक माय इनर बीइंग, यू हैव टू शो मी द वे. I don't know. I'm not taking this, and this is how it is. I had that internal conversation with the higher intelligence, and immediately I got do pranayam. ऐसे आवाज आई थी अंदर से. ठीक है, I did pranayam. It did not take me even 1 hour for that chronic problem to totally go away. ठीक है, फिर मैंने आपको third example बताया था इसके पहले, that a person's daughter, a young girl, she constantly kept having some kind of an allergy. ओके, लगातार उसकी पूरी बॉडी पे रेड 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 कुछ निकलता जा रहा था. एंड देन उसके बाद लाइक बहुत परेशान हुई. ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने उसको बोला देखो स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे, क्रॉनिक है और रोज रेड हो रहा है, रोज ऐसे लाल दाने निकल रहे हैं पूरी स्किन के ऊपर. ठीक है, कभी निकल रहे थे, कभी हल्के थे, कभी ज्यादा थे. देन she meditated on that and she asked her inner self that what is it that's giving me this, और उसको चावल का दाना, चावल की कटोरी, मतलब राइस भरी हुई कटोरी, राइस ग्रेन्स, ये राइस कर्नल्स, ये सब नजर आने लगे. और उसके बाद प्रिंट में भी उसने कहीं पे राइस देखा, सो उसको राइस से अब्रप्टली एलर्जी हो गई थी. ठीक है, देन फॉर अ व्हाइल शी स्टॉप्ड राइस, ऑल्दो नाउ शी स्टार्टेड टेकिंग इट अगेन. सो दिस इज हाउ योर इनर बीइंग टेल्स यू दैट अगर आपको कोई बीमारी है, देयर इज एनी इशू इन योर बॉडी, देन हाउ टू रिजॉल्व इट. सो ये एक लाइन थी, आई डोंट नो वेदर आप लोगों ने कल इसको फॉलो किया कि नहीं. इलनेस एंड एक्सीडेंट्स are often messages that our concepts need changing. क्योंकि हम लोग इतने rigid हो जाते हैं ना कभी कभी अपने concepts के बारे में, और some inner problem needs to be resolved. तो वो ये इसके इंडिकेटर होते हैं बीमारी. ठीक है, अब इसमें से ये तो हमको अपने से पूछना पड़ेगा ना, मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट है दैट नीड चेंजिंग. या तो डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहे, है ना, एक तो वो वाला ऑप्शन है, या फिर मेडिटेट करिए और पूछे व्हाट इज इट इन मी दैट नीड्स टू बी चेंज्ड. आपको रिवील हो जाएगा.
ठीक है, और some inner problem needs to be resolved. So some inner problem needs to be resolved. कुछ है इशू अंदर जो आपको मे बी आपको फॉरगिव करना है, तो उस पर्सन का फेस आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, उसके फोन पे उसका कुछ आपका मतलब whatever something in universe brings that name in front of us in some way or the other. ओके एंड आप उसको फॉरगिव करोगे, फॉरगिवनेस मेडिटेशन करो, रिलीज दैट पर्सन. आई रिलीज यू नाउ, जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने हमको सिखाया था ना, I release you now. I release this person is going and being very happy in his life. I release this person from my life and this person is going and being very happy in his life. Bless that person with happiness and release that person. आप देखना कि इतने क्रॉनिक प्रॉब्लम, इतनी पुरानी बीमारी को 2 घंटे भी नहीं लगेंगे ठीक होने में. This is what it was. Okay. फिर उन्होंने तरीका बताया, ये वाली लाइन कल बताई थी, उसके बाद तरीका बताया. Get as quiet as you can. Listen for your inner voice and ask what the message is. Okay, what are the universe messages or what it is that you need to understand in this situation. आप पूछो, ये आपको पूछना पड़ेगा कि यूनिवर्स आपका मैसेज क्या है. Inner being, to my higher intelligence, to the infinite intelligence and the infinite boundless wisdom, please reveal to me that what is the message that I need to understand. या फिर what do I need to understand in this situation. Okay, and you will get. If you have to go to the doctor also ना, somebody उसके बाद आपको कोई डॉक्टर बता देगा कि ये वो वहां से डॉक्टर है, इसका मतलब वो यूनिवर्स ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी थोड़े टाइम के लिए मेडिकल असिस्टेंस भी ले लो और उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगी. बट फिर मेडिटेट करना मत छोड़ना, है ना. इट इज नॉट दैट एक बार हो गया और जब काम पड़ा तो पूछ लिया और फिर भूल गए. अपने इनर बीइंग से कनेक्टेड होना और बहुत अच्छी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना, ये बहुत जरूरी होता है. हम सबके अंदर वो पावरफुल गॉड है that we can move mountains. Let's we realize that. Okay, so this book is actually connecting us. Even I didn't connect to my inner being before this book came to our life, right? तो हम आज से अभी ये वाला शुरू करते हैं. तो हाँ जी आरती आप पढ़िए. सॉरी तन्वी. Good morning. Good morning. It is important to understand that you are not guilty or to blame for any illness or physical problem you may have. Your sickness is not an indication that you are an unconscious person. Instead, think of it as an important part of your evolutionary journey, a gift that can help you learn and grow. Creative visualization can be an effective tool for healing because it goes straight to one source of the problem, your mental concepts and images. Begin to picture yourself and affirm to yourself that you are in good health. See your problems as completely healed and cured. There are many different approaches that can be taken on many different levels. You need to find the particular type of affirmations and images that works best for you. I have given some suggestions in part 3 of this book, and you can find others in recommended resources section. Of course, preventive medicine is always the best. If you have no health problems, so much the better. Simply affirm and visualize that you will always remain healthy and vital. That way, you may never have to worry about healing yourself. If you already have health problems, it will be comforting to know that many miraculous cures are being accomplished every day. Even for every serious illness, such as cancer, arthritis, and heart. If you already have. If you already have health problems, it will be comforting to know that many miraculous cures are being accomplished every day, even for serious illness such as cancer, arthritis, and heart disease through the use of various forms of creative visualization. Yeah, so it says that आप वो mental images जो आपके लिए वर्क करती है उसको विजुलाइज करो और जो एफर्मेशन आपके लिए वर्क करता है वो विजुलाइज करो, है ना. जैसे अगर मी एज दीप्ति, अगर मुझे अपनी हेल्थ को देखना होगा तो आई वुड विजुलाइज माई सेल्फ
that on completion of 5 kilometers of a run, okay, this is what I will visualize because ये मेरा goal होता है, मेरे लिए ये work करता है कि वाओ आज भी मैं 5 किलोमीटर मैंने रन किया, कितना अच्छे से, इतनी एनर्जी है मुझ में, दिस इज अमेजिंग। अब 5 किलो में रन किया, इसका मतलब है मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है ना, मेरे जॉइंट्स बिल्कुल ठीक है, मेरा मतलब एवरीथिंग इन माय बॉडी इज ओके, 5 किलोमीटर तभी मैं रन कर सकती हूँ ना। तो मेरा विजुअलाइजेशन वो होगा कि मैं अपनी वॉच में देख रही हूँ दैट वाओ आई हैव अकम्प्लिश्ड 5 किलोमीटर रन, ओके, व्हिच मींस माय हेल्थ इज गुड, सो दैट वुड वर्क फॉर मी। ओके, आपके लिए हो सकता है कि आप अभी में भी जमीन पे नहीं बैठ पाते हो, जैसे हम आलती पालती मार के बैठते हैं ना, वी फोल्ड आवर लेग्स एंड वी सिट ऑन द फ्लोर, so maybe you have so much of a bone issue that you're not able to sit on the floor, so for you it just could be visualizing that now you're able to do that. Okay, suppose you're working at whatever, like आप नहीं mountainous area terrain चढ़ पाते because maybe आपको asthmatic हो थोड़ा सा, so you're not able to do anything that needs a lot of heavy breathing. Now you imagine yourself that how easily you're walking with your friends and family and you're climbing a mountain, और आप सीढ़ी चढ़ के किसी temple जा रहे हो, or wherever it is. Okay, so whatever works best for you health wise is what you need to you need to visualize. So that is how we need to. So similarly, like if Ritu Khanna, because she's going through a chemotherapy, so अगर रितु को विजुलाइज करना होगा तो बिकॉज कीमो की वजह से उनके बाल निकल गए, तो वो विजुलाइज करेंगी कि उनके दोबारा, सो वी ऑल सीन अ हेयर, शी ऑलवेज हैड वेरी ब्यूटीफुल हेयर, नो, टिल जुलाई शी हैड, बिकॉज मेरी बर्थडे पे जब उन्होंने वो 13 डांसेस किए थे तो कितने सुंदर बाल और कितनी एनर्जी थी उसमें, जबकि वो उनकी ट्यूमर सर्जरी के बाद थी, ठीक है, बट कीमो उसके बाद शुरू हुई तो उनके बाल फिर चले गए थे। अब अभी भी तो अब जैसे ऋतु विजुलाइज करेंगी तो वो देखेंगी कि उनके कितने सुंदर, सो इट्स नॉट अबाउट बाल, ओके, कि उनके कितने सुंदर बाल अब लग रहे हैं और पहले से भी बेटर क्वालिटी ऑफ हेयर उनके अब ग्रो हुए हैं, ठीक है, और उनकी इतनी एनर्जी है कि वो यहाँ हमको पोएम सुना रही हैं, वो मजे कर रही हैं, वो इंजॉय कर रही हैं, इसका मतलब है उनकी प्रॉब्लम ठीक हो गई, इसका मतलब है उनका कीमो रुक गया, है ना, और उनके बाल दोबारा से इतने सुंदर रीग्रो हो गए, इसका मतलब है हील्ड हो गई हैं पूरी तरह से, तभी तो इतनी खुशी से हमको पोएम सुना रही हैं, हमारे साथ मजे कर रही हैं, हंस रही हैं, and she's sharing her experiences and all that, है ना। So it's not about hair, but it's about that she's regained that health all over again and the chemos have stopped and now she's absolutely okay. तो इस तरह से सबके लिए क्या विजुलाइज करना है हमको, वो अलग अलग चीज होती है, बट उसके पहले अपने आप से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है और पूछना दैट व्हाई इज दिस हैपनिंग टू, व्हाई डिड दिस हैपन, ठीक है। जनरली बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ओवर थिंकिंग और ग्रज और रिजेंटमेंट के कारण होती है। तो ग्रज और रिजेंटमेंट को डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने वो दिया है, लाइक ग्रज और रिजेंटमेंट, कि आप किसी और को पावर दे रहे हो अपने आप को नीचे रख के, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रज एंड रिजेंटमेंट। वी कैन नॉट मेक आवरसेल्फ पावरलेस। सो जैसे ही अगर आप अपनी माइंड, अपनी लाइफ को इतना लुक डाउन अपॉन करते हो, कभी कभी हम अपनी लाइफ को बहुत लुक डाउन अपॉन करते हैं, है ना, नीचा देखते हैं। सो इफ लाइफ डजंट लाइक इट, सो इट इज लाइक, इमेजिन किसी ने प्रेशियस गिफ्ट दी है, ठीक है, ह्यूमन फॉर्म में हम पैदा हुए हैं, 84,000 योनीज में से सबसे हाई शिरोमणि, ठीक है, इज द ह्यूमन फॉर्म। सो यू हैव टेकन द बर्थ इन द ह्यूमन फॉर्म and you're constantly demeaning your life, getting angry, doing this, troubling your body, eating whatever you want to without thinking twice, okay, drinking anything, any trash, कुछ भी ऐसे इधर उधर, ठीक है, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, लाइफ भी तो नाराज हो जाती है ना, बॉडी भी तो हक है उसका, बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग आफ्टर इट एट ऑल। इसीलिए कहते हैं ना, ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेम्पल, सो ट्रीट इट लाइक अ टेम्पल। टेम्पल में क्या, so this is how it is like. So of course connect to your inner being, and inner being will keep telling you that you need to have this way, you need to have this way, है ना। डॉक्टर वेन डायर थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई है, तो उनको ट्यूमर या कुछ ऐसा हो गया था, मतलब उनको, है ना, इट वाज मैलिग्नेंसी थी, तो फिर वो अपने आप उनको हंच आया कि उनको कहाँ पे, किसी ने उनको बताया कि आप इस जगह पे जाओ, एंड दैट पर्सन, उसने बिना छुए उनका ट्यूमर डिसिपेट कर दिया, ऐसे जैसे आशीर्वाद टाइप देते हैं ना हाथ से, अपनी एनर्जी से। इतनी एनर्जी होती है हम लोगों में कि आप किसी का ट्यूमर श्रिंक कर सकते हो,
तो वहां पे उनका श्रिंक हो गया, वो दोबारा से ठीक हो गए. तो आई वाज लाइक so odd when I read his experience and all of that. He had some intestinal cancer, something. So this is what energy means and being connected to ourselves inside. हमको हर चीज का हंच आ जाता है, बट हमको अपनी अंदर की आवाज सुननी पड़ेगी. या तो हम आउटर नॉइजेस सुनते रहें या फिर इनर वॉइस सुने, ये तो हमारी चॉइस होती है. सो दिस बुक डिलिजेंटली अगर हम करेंगे इस तरह से, तो इसमें जैसे लिखा हुआ है ना, दैट मिराक्युलस cures are being accomplished every day, even for very serious illnesses like cancer, arthritis, and heart diseases, through the use of various forms of creative visualization. So, but वो visualize हमको करना है जो हमें लगता है कि हमारे लिए work करता है. ठीक है, हमको वो visualize करना है. Life is so beautiful, easy, and effortless. I think this affirmation we have to tattoo all of us. We slog a lot, we effort a lot in life, not realizing that like that gratitude and love has so much of a power. Mental images जो हमारे thoughts and feelings पूरे टाइम, ये नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, पता नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, हेल्थ ऐसी है. We don't need to. हमको अपना माइंडसेट अब चेंज करने की जरूरत है. ठीक है, एंड आई हैव सीन दिस, लाइक मैं तो ये 4 साल से अब प्रैक्टिस कर रही हूँ, मतलब नहीं, 3.5 पौने 4, इतने साल हो गए. मार्च में हो जाएंगे 4 years of practicing these books, and there's so much life which is changing every day. A new door opens every day, something, like just day before yesterday in the night, I saw the message, I saw it yesterday morning. There's somebody that, can you please come and train all the Femina Miss Indias and this and that. I mean, although I don't know whether, I'm not sure if I have the bandwidth, but such amazing opportunities just because you want to touch the life of others. So when I'm talking to them, so मैं तो बहुत intention के साथ उनको groom करूँगी ना. I will not just tell them that they should have this kind of a fitness, this is what they should be eating, this is what they should be thinking, because physical, mental, emotional health अगर मतलब finalist की अगर आपको ठीक करनी है, तो obviously you would be touching their life, but amazing opportunities come. It's not a small thing, So amazing opportunities to travel to the best places, and इतने amazing outcomes उन travel से निकलते हैं कि मैं बता भी नहीं सकती, which is changing the life. So financially, emotionally, physically, I mean, the kind of health I enjoy is like, it's insane, like मैं पूरे दिन खड़ी रहती हूँ. Even at my age, I'm not a very, age-wise a young person. Okay, whole day I'm standing and in heels, my job's like a glamorous job, although like I'm work as a doctor. But in this industry where I work, in my industry, it's a glam industry, right? So it is always like पूरे heels. मुझे इतना सा भी एक second जो होता है ना, thought that let me just sit for a moment, let me just do this for a moment, that doesn't come. If this is the health we can gain as a result of these gratitude practices, relationships are mind-blowing, amazing, all of them. Okay, so it's so much. So everything has fallen into place ever since these books have come to my life. And you all who have been there from the very start, even when you've not been, there are people who are very new into this journey. They've just joined about 2 or 3 or 4 months ago. But you see the difference it has made to life is not the same again. It's so beautiful. So as power book mein jo likha hua hai na, you're supposed to enjoy your life to the full bloom. I'll just see if I can bring that on the screen. So that is so amazing. Power book. Here. So this is what Rhonda Byrne says, that you're supposed to enjoy your life to the fullest and not slog, not like think. अपने आप पे work करो, environment पे work करने की जरूरत नहीं होती है, that is how it works. So अपने आप पे work करेंगे, अपने आप सब कुछ fall into place हो जाएगा. So इसमें जो first paragraph है, I read that for you earlier. We quickly run through it. It is a tiny paragraph, and maybe Tanvi can only read it for us. फर्स्ट पैराग्राफ है इस बुक का. ये भी रॉन्डा बर्न की किताब है जो हमने पहले पढ़ी थी थोड़ा सा.
And it says you're not born to slog your life. You're not born to sit and cry. You're not born to suffer from any kind of a health issue. Okay, that is not what you're born for. You're born for some amazing, perfect health. इसमें जो लिखा हुआ है, perfect health, incredible relationships, a career you love, a life filled with happiness, and the money you need to be, do, and have everything you want all come from the power. Okay, the life of your dreams has always been closer to you than you have realized. So I think I'll do that tomorrow. Tanvi, you can read it for us only because it's in the content. So one of the chapters. So I think introduction mein, let me just see. So बहुत अच्छा लिखा हुआ है, you know. So I'll bring it on to the screen tomorrow. So thank you so much, and Tanvi, for reading so beautiful. Maybe if you want, you can continue to read the day you're comfortable. Next. Thank you, ma'am. Anjali. So yes, you want to share something, Aarti? देखो मैं आपका आज मैंने कितनी बार नाम लिया है. I know, ma'am. Good morning, ma'am. Thank you so much. Actually, all because of your guidance. मैं ये सब कुछ कर पाई. Day before yesterday, day 19, around 8 o'clock in the evening, I got a call from my husband कि उनकी कंपनी में कुछ ऐसा चल रहा था जहाँ पे कुछ IT रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई थी. And there are two Sanjay Guptas in the same company. तो दूसरे संजय गुप्ता ने कुछ किया था, and the chairman sir said कि he has done all these things and they had put all the allegations on him and they gave him a letter of termination plus asked him to give 30 crores in 1 day, in 1 month. He has to compensate 30 crores in 1 month. And he told me at 8 o'clock. I just पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि what has happened. उसके बाद आराम से मैं बैठी, मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का बुक खोली, उसमें से 2 अफर्मेशन देखी. पीस बी विद यू. आपने एक था कि मैंने चेयरमैन सर को लिखा कि पीस बी विद यू बहुत बार लिखा. फिर उसके बाद मैं बड़े शांति से बैठी एंड आई जस्ट रोट थैंक यू ब्लाइंडली, टोटली ब्लैंक. आई थिंक 1.5 या 2 पेजेस लिखा होगा. उसके बाद आई जस्ट गिव 108 gratitude to chairman sir and the company. 108 to the company and 108 to the chairman sir. उसके बाद भी आई मतलब मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. देन आई स्टार्टेड विद डे 1. मैजिक बुक उठाई, डे 1 चैप्टर पढ़ा, फिर किया. डे 2 चैप्टर पढ़ा, उसको किया. डे 3 चैप्टर पढ़ा, उसको किया. डे 4 चैप्टर किया, उसको किया. कंटिन्यू किया टिल डे 19. एंड देन मैंने अपने पावर ऑफ मतलब मैंने फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोला कि लुक आई डोंट नो, जो भी ठीक होगा, आई डोंट नो इफ माय हस्बैंड इज राइट और अदर पर्सन इज राइट, आई डोंट नो, जो भी ठीक हो उसको जस्टिस मिलना चाहिए. एंड मतलब नींद नहीं आई मुझे पूरी रात भर, मतलब मैं झूठी बोलूं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, बट जब भी मैं उठी थी तो आई जस्ट केप्ट ऑन सेइंग सक्सेस हैप्पीनेस. जो उसमें था ना कि आप कंटिन्यूसली बोलते रहो 5 मिनट्स. तो मैं जब उठती थी मैं फिर सक्सेस हैप्पीनेस करती रही. एंड अराउंड tomorrow yesterday around 12 o'clock I got the news that everything is okay. आते की आवाज चली गई है. Yes ma'am. तो कल around 12 o'clock मुझे पता चला कि everything is okay. The other Sanjay Gupta had done this thing and all the allegations were taken off and मतलब everything was perfectly fine. Everything was perfectly fine. So this is the really मतलब मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था except for gratitude. मुझे और कोई किसी का नहीं समझ में आ रहा था मुझे और क्या करना. मॉर्निंग में भी उठ के मतलब आई एम नॉट वेल फॉर द लास्ट 2 days. तो मैं मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहीं लिख पा रही थी. बट उस दिन तेजल का सुना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आप माला करना शुरू कर दो. तो आई हैड स्टार्टेड डूइंग माला. तो मैंने कल उठ के माला भी करी थी, मतलब 108 टाइम्स. बट कल परसों और कल तो मैंने बहुत सारा लिखा है एंड ऑल दैट पेन हैज गॉन, एवरीथिंग हैज गॉन. तो आई थॉट कि ये मेरे लिए भी एक वो था कि एक ग्रैटिट्यूड किया तो दोनों का ठीक हुआ, हम दोनों का ठीक हो गया.
Amazing. This is like इतना बड़ा चीज lift होना, so that's incredible. And you are incredible. 108 for the chairman and 108 thank you and 19 assignments in one day. Has anyone ever done it? I haven't. I haven't done all 19 in one day. She's और that मैम और brave. कुछ समझ ही मैम और कुछ हाँ समझ ही नहीं आ रहा था उस बहुत टाइम कुछ ज्यादा और समझ करती है नहीं आ मैम, रहा था बहुत ज्यादा करती है, बहुत अच्छे से करती है आरती, हमने हाँ, अरे बहुत हाँ, बहुत डीप बहुत प्रैक्टिस है। अच्छे। ये जब लिफ्ट में घुसती है तो लिफ्ट की फ्लोर को थैंक यू बोलती है, लिफ्ट की वॉल को बोलती है, लिफ्ट के बटन को बोलती है, जिस पावर से, जिस मशीन से द लिफ्ट इज गोइंग अप एंड डाउन, उसको, मतलब दिस इज अ लेवल ऑफ प्रैक्टिस। सो अमेजिंग आरती, दिस इज अ नहीं की लर्निंग फॉर अस दैट इतनी बड़ी चीज जहां दूसरे लोग गवर्न करें, समटाइम्स यू बिकम हेल्पलेस व्हेन द डिसीजन इज इन समवन एल्सेस हैंड, right? But there also to gain that power and kind of decide the outcome and do practices and leaning on gratitude, है ना? This is नहीं मैम एंड मैंने incredible. इनफैक्ट ग्रेटिट्यूड उस सिम कार्ड को भी दिया जो कंपनी ने संजय को दिया हुआ है आई गिव थैंक्स टू दैट सिम कार्ड ऑल्सो मतलब आई डोंट नो हिम एक्चुअली पर्सनली तो मैं जानती नहीं हूँ So I just kept on saying कि अच्छा आपने ये चीज को भी दिया आपने ये चीज भी दिया see you're paying all the bills for the telephone this thing for the Wi-Fi for this thing मतलब मेरे को जो समझ में आ रहा था ना मतलब इवन जो वहाँ ऑफिस की स्टेयर्स को भी मैं विजुअलाइज ही कर सकती थी कुछ मुझे पता नहीं था ज्यादा तो जो मेरे को समझ में आ रहा था मैं उसको थैंक यू बोल रही थी मतलब दैट इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड एक्चुअली दैट Yeah, इज द that is पावर the power of gratitude. Yeah. Thank you for sharing with थैंक us. Although थैंक it यू could be सो very personal thing, to you, but this sharing will bring a lot of victories in your life. So you will see your way forward now is going to be illuminated. एंड मैम मैं विजुअलाइज जब करती हूँ तो मैं सिर्फ यही करती हूँ कि आई एम टेलिंग इन द ग्रुप ये सबसे बेस्ट विजुअलाइजेशन है ये सबसे हाँ, बेस्ट सबसे best. विजुअलाइजेशन है Yeah. हाँ, क्योंकि ये क्योंकि दूसरों आई की कैन जिंदगी बदलने के लिए है। एंड आई कैन हियर योर वॉइस कि अरे वाह ये चीज हो गया तो हम्म, उससे ना एक और वो फीलिंग आती है कि हाँ कर लिया हम्म, वो दैट गिव्स अस मोटिवेशन yeah. Incredible. Congratulations. And your husband will only grow and prosper and flourish and thrive and, like shine wherever he is now. So थैंक यू मैम थैंक यू please सो मच congratulate him also from our side and say that we were celebrating his victory. थैंक यू Thank you. So we have Sandhya and Jagrup, but again, since I have to leave in a while, so I'll make one of you the host. So Poonam, will you be able to connect, or Priya? I can make you the host and connect from my phone. Yes, ma'am, I can. You can. Yeah, please start sharing. Sandhya, please start sharing. Yeah, good morning, ma'am. Mhm. Ma'am, I have one question only. Mhm. There is one person in my life who is creating problem again and again. I have done practices also, though my relation with that person was good. But every time, after some time, there is, something happened and I'm getting, depressed and other things. So I have one question. Whether shall I stop talking with that person or is there anything else? You have to work on yourself, not on the other person. And firstly, there are no good and bad people. It is a perspective, because अगर person A है, suppose उसका नाम आशीष है, आशीष अपने सारे दोस्तों के लिए बहुत अच्छा है, आशीष अपने माँ बाप के लिए बहुत अच्छा है, आशीष अपने नेबर के लिए हो सकता है बहुत अच्छा हो, बट वो आपको नहीं अच्छा लग रहा ना, इसका मतलब है आपको अपना लेंस बदलने की जरूरत है व्हेन यू सी दैट, है ना? बिकॉज वो सिर्फ आपको नहीं अच्छा लग रहा, हो सकता है आपके अलावा और 3 लोगों को नहीं अच्छा लगता हो. सो अच्छे बुरे तो लोग होते ही नहीं है. देयर इज नो गुड एंड बैड इन दिस वर्ल्ड. ओके, इट इज ओनली आवर पर्सपेक्टिव. सो नाउ व्हाट यू, इफ दैट पर्सन्स थॉट इज ट्रबलिंग यू टू मच, अभी उससे बातें करना कम कर दो, बिकॉज उस ऑरा में जाके आप बार बार पुल डाउन हो गए, है ना? लेकिन आपको अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा. उस पर्सन को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, उसके जो भी अच्छे जो, अगर वो क्लोज पर्सन है तो आप चैप्टर नंबर 3 पे जाओ, मैजिकल रिलेशनशिप, जहां पे आप उसका फोटो रखो सामने और आप उसके बारे में 5 पॉइंट्स लिखो.
that I'm so grateful that, you know, you have such a good height. You know, I'm so grateful that your voice is very, very, you know, like nice when you speak. So I'm so grateful that you did this for this, or you have made your own beautiful house, you know, on your own shoulders, which is so incredible. I'm so grateful. अगर आपको उसकी तारीफ नहीं की जा रही कि उसने आपके लिए क्या किया है, तो आप उसके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है आप उनके बारे में लिखो, और उसके अलावा दिन में 2 बार और आपको उसकी फोटो निकाल के थैंक यू, उसका नाम थैंक यू आशीष ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है। और मेडिटेशन में फॉरगिव करो, ठीक है, बिकॉज ये आप रिजेंटमेंट जो होल्ड कर रहे हो, ये सब एनर्जी आपकी जिंदगी में आपकी ड्रीम्स आप तक आने नहीं दे रही है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. Okay, so you need to bless that person with utmost wisdom. And अगर आपको लग रहा है वो wise नहीं है, ठीक है, wisdom, safety, security and happiness, ये 4 चीजें उस person के लिए, ठीक है. So I should not stop talking with that person. हाँ, अगर आप बार बार लो हो रहे हो ना, तो अभी आप अपने आप पे वर्क करो, and when you worked on yourself, slowly that grudge against him is going to dissipate. Okay, that will get tapered off, and then now when you are in that person, आपको बहुत bless करने का मन करेगा. It might take a month maybe, but yeah, you will have to do it. Okay, you need to change you have to scrub your own glass because you're seeing through a tinted glass right now. So you Thank work you. on yourself. Everything will fall into place, and when you do this, Sandhya, mark my words, you will have that most rigid area of your life which is not opening up right now, open up in front of you. You know, the most rigid area, जो बहुत टाइम से मे बी कोई चीज आपकी जिंदगी में जो नहीं खुल रही है, मतलब जो नहीं, it's not really, you're not able to see it happening in front of you. You know, it's just not moving, and maybe it's moved a little, but it's not really happening in full fruition. So by doing this, you will see that all the other areas of your life will get illuminated, because ये वाली जो रोशनी आप ला रहे हो, ये जो सन आप इस पर्टिकुलर एरिया में ला रहे हो, वो सन आपके बाकी के एरियाज को भी इल्यूमिनेट करेगा. एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. व्हेन द सन शाइन्स, इट इज नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट शाइनिंग इन जयपुर, आई एम शाइनिंग ओनली इन दिल्ली, आई एम नॉट शाइनिंग इन बैंगलोर. इट मेक्स लाइट एवरीवेयर. All over India, we see that the sun is shining. Rather, most part of, you know, जो इस हेमिस्फीयर वाली जो जितनी जगह, तो वो तो ये नहीं कहता. तो इसलिए आपके सारे एरियाज इल्यूमिनेट होंगे. ये जो आप फॉरगिवनेस करोगे, या ब्लेसिंग, या मेडिटेशन, या मैजिकल रिलेशनशिप वाली प्रैक्टिस, तो सबसे स्टबर्न एरिया आपकी लाइफ का विल ओपन अप इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे. Okay, and then you share this experience with us. Thank you. Okay? Thank you. Ma'am, one question. You said success, safety, security, and one fourth word. Happiness. Happiness. Wisdom. Thank you so much. Because I think if that person maybe is not doing something appropriate, so इसलिए जो boundless wisdom होती है ना, infinite intelligence की, that has to shine in his life. Maybe वो tap नहीं हो रही है, but हमारी blessing से वो हो जाएगी. ठीक है, चलो then we'll. There was Jagpreet, someone. मैम there's Like- Jaggroup's, हाँ Jaggroup's experience. वो Jagroup. सतविंदर आंटी उस दिन बोल रहे थे ना, सविंदर आंटी उनका. हाँ, ओ, या अरे Please, वाह, Jagrup तो मैं जी, फोन से yeah. कनेक्ट करके सुनती हूँ. ओके मैम. प्लीज शेयर. आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए. Is he still there? Yeah, that's what I was checking. Jagrup ji. Okay. Yeah, he's there. अच्छा, तो प्लीज बोलिए. जगरूप, हमने आपके बारे में बहुत सुना है, आपकी तारीफों के पुल आंटी ने बांधे हैं. अब आप शेयर कीजिए. पता नहीं, एज ए नेवर माइंड, मे बी टुमारो. ठीक है, so we can kind of log out and call it a day and have a great. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Bye. Amazing Bye, session. ma'am. Thank you so much. Amazing Thank day. you. Fun and Thank laughter. you. Thank you. Thank you.